Dear student, today we are in our lecture number 4 of GOC. Question number 73. Which of the following fertilizers we are using in the farm to give nutrition to the plant? That is fertilizer, artificial, highest nitrogen percentage. कौन सा फर्टिलाइजर नाइट्रोजन परसेंटेज ज़्यादा रहेगा? एमोनियम सल्फेट, here NH4 twice SO4. Second one calcium cyanamide, then urea and ammonium nitrate. First of all, we have to count molecular mass. यूरिया का molecular mass 60 gram per mole. If total mass of nitrogen is suppose 60 gram, पूरा का पूरा, so 100%. But here nitrogen 2, so one nitrogen having 14, so here 2 nitrogen, so 28 gram out of 60. तो percentage कितना? 28 into 100 divided by 60, round about 48% आएगा. 280 divided by 6, 46.46% रहेगा. कैसे? We have to count. So answer C आएगा, highest. Now question number 74. 2-methyl 2-butene will be represented as 2-methyl 2-butene. 2-butene क्या रहता है? Number of carbon 4. So 1, 2, 3 and 4. On second position पे methyl, so 2-methyl. On second position double bond, so 2-methyl butene. Answer is B. Now 75. The IUPAC name of the compound. Here we have to define reactive groups. Aldehyde, इसका सफिक्स आल रहेगा. डबल बॉन्ड, इसका सफिक्स इन रहेगा. मिथाइल का प्रीफिक्स आएगा. देन OH, उसका भी प्रीफिक्स आएगा. हाइड्रोक्सी, ये वाला सबसे रिएक्टिव रहेगा. सो 1, 2, 3, 4 and 5. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक प्रीफिक्स वाला HNM. आउट ऑफ 2, H वाला फर्स्ट रहेगा. सो 4 हाइड्रोक्सी, देन 2 मिथाइल पेंट, 2 इन. सेकेंड पोजीशन पे इन आ रहा है. फर्स्ट में आल, 2 इन 1 आल. दिस इज अवर आंसर. In question number 76, isomers of a substance must have the same molecular formula. Suppose I am giving you C3H7Cl having formula structure is 1 chloropropane and 2 chloropropane. So here is 1, here is on second position. So 1 and 2 दोनों का molecular formula same रहेगा. In every isomers must have molecular formula same. Which of the following is the most stable carbocation? कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा? Obviously positive charge carbon is connected with one carbon, so only one donor आएगा. उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और 2 कार्बन पे डिवाइड हो जाएगा. इन द सेकेंडरी, this carbon
is positive charged connected with another two carbon atoms. ये वाला सेकेंडरी हो गया. सो उसका पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन पे डिवाइड हो जाएगा. सो इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी. ये वाला टर्सरी रहेगा. पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर 3 कार्बन एटम्स. सो यहाँ पे 3 डोनर्स आ रहा है. इसका पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल 4 कार्बन पे डिवाइड होगा. सो ये वाला मोर स्टेबल रहेगा. इन बेंजाइल केटायन this one is the primary. So C is our answer. In sodium fusion test of organic compound, the nitrogen of the organic compound is converted into sodium fusion. In the Leysin test, nitrogen containing compound organic when react with the sodium, so there is carbon and nitrogen, so it convert into sodium cyanide. During fusion test, Leysin test, सोडियम के साथ नाइट्रोजन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या दे रहा है? सोडियम साइनाइड देगा. The shortest carbon-carbon bond distance is found in कार्बन का डिस्टेंस किसमें कम रहेगा? डायमंड. Every carbon is attached with another 4 by sp3 hybridization. In ethane, every carbon is sp3 hybridized. In benzene, every carbon is sp2 hybridized. सभी कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है. So every carbon has sp2 hybridization. In acetylene, there is triple bond. This one experiences sp hybridization. So sp orbital is short. So bond length is very short because carbon has a triple bond. So bond length is very short in acetylene. ये वाला सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड. So obviously distance decreases with increasing in number of bond between two carbon atom. ये बॉन्ड लेंथ 135 रहेगा. ये वाला 120 हो जाएगा. ये वाला इससे भी कम रहेगा. 80. sp3 hybrid orbital contains. In sp3 hybrid orbitals क्या होता है? 1 of s and 3 of p. Out of 4 orbital, 1 of is s. So 1 by 4 of s character, p character 3 by 4 रहेगा. Out of 4 3 part, out of 4 1 part, so 1/4 part of s character रहेगा. 81. A straight chain hydrocarbon has the molecular formula C8H10. Hybridization of the carbon atom from one end of the chain to the other are respectively sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp and sp. The structure formula of the hydrocarbon would be. So यहाँ पे you can see this one CH3. So ये वाला sp3 हो जाएगा. Then here is double bond sp2. Sequence sp3 sp2. Then after double bond, so this one sp2. Then CH and CH2. ये वाला sp 3 रहेगा. 2 times sp2, then sp3, then one again ये वाला डबल बॉन्ड, so sp2,
then ये वाला again sp2, then C triple bond C ये वाला sp and CH ये वाला ट्रिपल बॉन्ड sp रहेगा. So sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp sp. So we have to find so answer is D. In Gelder's method is used in the estimation of actually Dumas method and Gelder's method both are for detecting percentage of nitrogen. An organic compound X molecular formula is C6H7O2 and 1 nitrogen. The 6 carbon atom in a ring system. Yes, 6 carbon in the ring. 2 double bond and nitro group is substituted. So X will be. There is a double bond homocyclic but not aromatic car. Yes. 6 carbon in the ring. Okay. Then 2 double bond. There are 2 double bonds. Okay. And a nitro group is there. So you can see, suppose here is double bond, so CH2, 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 CH2. Here is CH. Number of carbon 6, nitrogen 2, 4, 6, 8, 9 हो गया. So suppose here is double bond. Now it's okay. Here is 2 double bond, but in the ring there should be 3 triple bond. C6H7 and NO2. यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होने चाहिए. तो ये वाला होमोसाइक्लिक क्या रहता है, रिंग में सभी सेम कार्बन एटम रिंग बना रहा है, होमोसाइक्लिक but not aromatic. Why? In the ring there should be 6 pi electron according to Euclid's rule. So answer is A. Which one of the following can exhibit cis trans isomerism? कौन सा compound cis trans isomerism दे रहा है? Yes. In first there is no double bond between carbon carbon. In second no double bond but there is triple bond. Geometrical isomerism possible only in alkene. यहाँ पे C double bond C, then HNCl. HNCl. ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन दोनों डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच आ रहा है. ये वाला भी डिफरेंट, सेम ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. सो ये वाला सिस, देन Cl Cl ऑपोजिट साइड आ जाएगा. सो ये वाला ट्रांस. सो इट गिव्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. नाउ 85. In which of the following possesses a sp carbon, sp average carbon in its structure? ये वाला डबल बॉन्ड हैविंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा. This one double bond sp2, this one sp2 and sp2 रहेगा. Here double bond having carbon, so sp2 sp2. This one is sp2, but यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आ रहा है. We are not taking pi bond for the detecting hybridization. Bonding pair to lone pair 0, x का वैल्यू 2. So ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज रहेगा.
So answer is C. In fourth, all the carbon is sp2 hybridized रहेगा. Now in 86, cyclic hydrocarbon A has all the carbon and hydrogen atom in a single plane. All the carbon-carbon bond have the same length, less than 1.54 and but more than 134. The bond angle will be, yes, bond length एक ही प्लेन में सब कार्बन आ रहा है. 154 क्या रहता है सिंगल बॉन्ड, 134 क्या रहता है डबल बॉन्ड, इसके बीच में आ रहा है. सो इट शुड बी बेंजीन. Here overall bond length is 1.39 angstrom. So ये वाला एंगल 120 रहेगा. सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है. pi bond we are not considering in the bond angle. So all the sigma bonds forms 120 degree. 120 degree रहेगा. Now next, Lessing test is used in qualitative analysis to detect. Lessing test कौन सा एलिमेंट का क्वांटिटी डिटेक्ट करने के लिए तो होता है. नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटेटिव टेस्ट. नाइट्रोजन रहेगा, क्लोरीन और सल्फर. All of this, yes, we can define by using Lessing test detection of qualitative analysis, not quantity, quality. Which element is present in given organic compound? How many chain isomers could be obtained from the alkane C6H14? C6H14 क्या रहता है अल्केन मीन्स CnH2n+2. उसका चेन आइसोमर वी हैव टू डिफाइन. सो 6 कार्बन इन लॉन्ग चेन. सो ये वाला नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा. इफ 1 कार्बन इज ए ब्रांच, so here is CH3, 2-methyl pentane. Then on third position there is methyl group, so 3-methyl pentane. If 2 branches on same carbon is a methyl, 2,2-dimethyl butane. On second and third position there is branch, so 2,3-dimethyl butane. So total number of isomers are 5. 89, last question. Chlorine carbon and chlorine angle in 1,1,2,2 tetrachloroethane. 1,1,2,2 tetrachloroethane and tetrachloromethane. Tetra means 4 times. Respectively, ये वाला इथिन, sorry, in tetrachloro 1,1,2,2 tetrachloroethane. This carbon experiences sp2 hybridization. So bond angle 120.
कार्बन क्लोरीन कार्बन एंड क्लोरीन 120 रहेगा, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन 120 due to sp2. This one experiences sp3, so chlorine carbon chlorine bond 109.5 degree रहेगा. So here due to hybridization angle 120 and 109.5. Here our MCQ over of GOC. Asked MCQ here over. Now bye. We will meet in our next lecture. Till then, bye.